सुमित, और तू भी जरा उनको जरा एक बोल देना कुमार, क्या बोल देना बॉस, ये क्रेडेंशियल अगर दे दिया तो हमारे लिए तो बहुत कम टाइम है, 1 या 2 दिन का। एक तो एजेंट यहाँ पे बीडीएल पर सिस्टम है। उस पर आई इंस्टॉल तो कर। आई होप इन ऑन द बीडीएल बीआईयू टीम से कौन है, सुमित आपका टीम से और कोई है क्या? बिकॉज आपका सिस्टम में कुछ तो कंट्रोल नेम ऑलरेडी चल रहे हैं, आई थिंक सो। इज दैट द सेम सिस्टम यू आर टॉकिंग अबाउट? हाँ, I am using the. So on that, are you aware that control is already existed in that one? Maybe yes, it's available to give some Then, jobs are scheduled over there. so then that means it's an easier job for me. What you need to come out is the path, source path and the destination path with the credential. Okay. Okay. So Sumit, if you have not understood, you can at least gather the information what Rajni has requested, source, destination, and the credential. And tomorrow you can set up a call with the Snehilata, and she will help you with the queries, and she will address your concern and how to transfer the file, because that is a very minimal information they require. And being the end control is already set up at your end, I think she will not take much time to configure the whatever your requirement is. Okay, sir. Sumit, do you have the destination wala SFTP? So I'm asking, but Not we need to connect acceptably that sharing that file share server drive. path. Share right. Shared drive path. That's it. ये again password के लिए से connect होना पड़ेगा किसी के पास. Dhananjay, you understood, right? I'll collect What the we are trying information. to establish here. Yeah. Got the point. But see, that's what I'm trying to say. For the problem which is in hand, I don't think there is any solution which is required. Do you require solution right now, Sumit, for the other data, the bigger one? So अभी create हो जाए, then we'll see कि वो मेरे end पे handle होगा या नहीं होगा. See, that's what I'm trying to say, Satish. Rather than actually giving you a solution for the current scenario, which is a 1,40,000 or 1 lakh odd data, which we will be able to cater to. Ongoing may, if we need a spark, if at all there is someone from CRM and CMS, whom should we connect with? If you can give us the information, that would be of great help. But if you're saying data is not under your purview, and that's not what we have, come together for, then let us know if at all we need space related issues to be catered to, or kind of parking one of the the various SFTPs, then whom do we connect with? That is part one, which we might have as an issue. But the part two, which I'm trying to say, even download might be sometimes a problem, which Sumit has not as of now encountered, but he was supposed to actually download some around 3 crore data. That was a requirement which we went ahead and spoke to RBI, telling them, boss, will you be able to handle 3 crore data, because it's going to be 3 crore. They went ahead and said, please give us 1 month data. So that is how we are right now. We are actually going ahead and kind of offsetting the scenarios and situations. But if at all there is someday, sometime they put their foot down, stating that we need the data. We had put a rough calculation. It was in some hundreds of GBs. So at that point in time, obviously we will come to you, because complaints has become like a melting pot. They are asking something which is very ad hoc and something which we have never heard of. At least Sumit and Santosh will agree with me, because we come up with some crazy stuff and they come back and tell us, "Boss, this is unheard of." So that is what we are currently facing. So if we have, Correct, Dhananjay, that is the beauty of RBI. RBI don't yeah, ask anything which is repetitive in nature. Okay, because their job is to find something which is not available, and we have to pinpoint that, right? Now the yeah, current problem statement where Sumit had a challenge on yeah, downloading and uploading to the share drive, that we have yeah, identified what can be done as a solution. Now, absolutely. second step to that, when you're talking that the bigger part is the number of transaction or number of requests, which is huge in Yeah, count. For yeah, that, you require additional storage, which I already told Prashant that he has to raise a request for the additional storage, because the okay, number, the today for one transaction, it takes 10 GB. Okay, just mathematical calculation. And how hmm, much data is requested by RBI for last 6 months data? If you can see, they are accessing 10, 100, 20, 1,000 numbers of emails.
then multiply and add 10 to 20% additional storage so that you don't find any shortage immediately when there is a request from the RBI for huge number of data to be extracted. Okay, because Sure. we will be able to solution on the process and I will guide what data to be made available for your processing. But from the storage perspective, in the bank we have centralized team, ISG team, who will be able to procure hardware which is required to manage your BAU activity. Okay, and for that you have to raise a fund, you have to raise a request, and that is currently in progress. So you can connect with your other members. They will help you what is the budgeting on the infra side, and they will allocate you require. And accordingly, they will charge for the respective department. And it is common for all. Even for the CRM, I am procuring and charge and I am paying that amount. Okay, but this is the internal calculation of the charge back to the every individual department. Sure. Okay, so at this juncture, I think the only one good thing Rajni has highlighted that M control is the something which we can immediately explore because Sumit is not finding challenge today, but tomorrow it may be a problem statement which may be in a bigger in nature. So what we will do, we will initiate this data with Snehata, Sumit, and we'll configure that because it's already installed, and we'll see how it goes by providing the source, destination, and the required credential. This job can be run in a programmatic or automatic mode. It can be run in ad hoc basis also because when you request this information, you can run the job and you can extract the information. And once the information is made available, you can store on the whatever the storage you are procuring from this exercise. So I think your both problem will address once you implement the M control, provide the details, and organize for the storage. For the storage, whom to contact, that detail if you need, we will help you on that part. Thank you. That would be a great help. Yeah. So, Kalpana, just one more question before we conclude on this call. Apart from these 2 points, what I understood in the complete forum, what we discussed last around 54 minutes, do you think anything which is not covered from this mail, which requires some more attention or some more discussion? Because whole discussion is going around on the data extraction and the storage capacity, which we have formally discussed also. But is there any gap? Because when I discussed with Prachand in the afternoon regarding the data truncation, because that logic was explicitly put by BIU, and he agreed that they can remove that and whole data can be pulled out because they put some 2000 as a limitation, which he knows how programmatically remove also. Yeah, there is no problem as such. This is what we are trying to communicate to you. Okay, so if that is a problem, I think these two problem statement will just summarize in the mail communication. And basis on that, we will make the action plan for the Snehata, Sumit, Santosh, and we'll seek the help from the Rashmi on this particular part. Sure. If anything missing, then we can definitely have an opportunity to append it and we'll take for the closure. Yeah. Okay. Okay. All right. Thanks everyone for your joining on this call and providing the valuable inputs. Definitely we'll make this sure that it is getting plus on priority and we'll keep Lipti also updated on this part. Okay. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thanks everyone. Thank you, sir. सुहास प्लीज एक कॉल करो ना अर्जेंट ओके ठीक सुहास बोलो
अरे मनोज भी इसको भी करो ना, मैंने एक केस दिया था। अब उसमें क्या हो रहा है कि मल्टीपल क्लोजिंग रिमार्क्स हैं। ओके अब उसमें से अगर लेटेस्ट लेता हूँ तो वो जस्टिफाइबल आंसर नहीं है। ओके मनोज केस दिखाऊँ ना जो दिया था? हाँ, एक मिनट में। 5-10 मिनट के लिए अगर रुका हूँ, फिर मैं निकलता हूँ अपना, फिर कल देखते हैं उसको। सारा भी अगर क्लोज हो जाए अच्छा है। स्क्रीन शेयर। सोर्स क्या हो रहा है मैं उसको बताता हूँ। 1,44,000 का डेटा डुप्लीकेट होके 6.5 लाख का हो गया। ओके और रीजन है, ये भी ओपन हो जाए तो, मल्टीपल रिमार्क्स। अगर मैं लेटेस्ट रिमार्क भी पकड़ता हूँ तो आई डोंट थिंक सो कि वो जस्टिफाई कर पाएगा आपका। ऑलमोस्ट 58 रिमार्क्स है। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ स्क्रीन दिख रहा है। तो शायद इसमें अगर मैं सबसे पहले लेटेस्ट कमेंट दिखाऊँ ना मनोज, अगर वो लेते हैं तो ईमेल के अगेंस्ट में कुछ जस्टिफाई नहीं करेगा। ये वाला request initiated for the same via SR number this tag for the same is 2 working days. ओके या तो मैं एक रिमार्क लेके आऊँ लेटेस्ट, जो कि क्लोजिंग रिमार्क होगा वो लेटेस्ट होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा डुप्लीकेशन है। ये और फिर इनके साथ डेटा साइज ऑलमोस्ट पता नहीं कितना चला जाएगा। 6 लाख में वो तो 6-7 जीबी में ऊपर जाएगा बहुत ज्यादा। डीजे को पूछना पड़ेगा यार, ये डिसीजन हाँ, नहीं ले इसलिए पाएगा। केस भी मैंने इसलिए ऐसा ही दिया जिसमें का बहुत सारे रिमार्क्स हैं। तो डीजे को ले लेता हूँ ना, एक मिनट। अभी वो थे तो तो बेटर अभी क्लोज हो जाएगा तो आई कैन थिंक कि मैं उसे क्लीन अप कैसे करके डालूंगा सिंगल। बराबर। हाँ भाई। So DJ Sumit is there, and we have one case where he is telling there are some 59 odd remarks. So he is unable to understand कि करना क्या है इसमें. So is it only one case or there are multiple cases like that? मल्टीपल वन केस। नहीं एक। अच्छा। तो उसमें एक लास्ट में जो मेल है, जो रेस्पॉन्स मेल होगा वही देना पड़ेगा उनको। अगर नहीं, इसका लास्ट कुछ अच्छा नहीं है ना रिमार्क। क्या है? अगर ये है तो फिर मैं लेटेस्ट ही पकड़ लेता हूँ कि लेटेस्ट रिमार्क जो है वो सिंगल आ जाएगा, डेटा डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। नहीं वो कहाँ पर है? वो देखो 4 days ago है। तो ये ओपन केस है अभी भी। 4 days ago। ओपन केस। ये नहीं बताई तो मैनुअली। नहीं ये देखो इसकी लिखी जाती, देखो यशिका चावला। ये सेकंड लास्ट कमेंट है। Yeah, again the same escalation was assigned to us with additional query of the known. But due to some कि technical, आपका 1.4 लाख का डेटा 6.5 लाख का हो गया। 1.4 का 1.4 लाख का डेटा था ना अपना, हाँ वो 6.5 हो गया। 6.5 GB हो गया। नहीं लैक्स नहीं, हो गया। 6.5 लाख। नंबर से ना वो क्या कर रहा है, मतलब जितना मुझे समझ में आया सुमित जो बोल रहा है,
अभी सपोज यहाँ पे 2 दिन में दो मतलब एक रिमार्क गया है 4 जनवरी को, एक रिमार्क गया है 26 जनवरी, 26 दिसंबर को. सो ही विल क्रिएट टू रोज, टू डुप्लीकेट एसआर. एंड उसका जो रिमार्क्स है वो अलग अलग दिखेगा आपको, एक ही में नहीं दिखेगा, मतलब एक रो में आपको ये पूरा कंसोलिडेटेड नहीं दिखेगा आपको. रिमार्क्स से केस नंबर सेम रहेगा और नीचे फिर हर एक रिमार्क के लिए अलग अलग रो उसको ऐड करना पड़ेगा. वैसा है, तो इसकी वजह से मतलब ये केस बार दिखेगा क्योंकि यहाँ पे 58 बार रिमार्क्स अवेलेबल है और 58 डेज को रिमार्क्स गया हुआ है. देन 26 को गया हुआ है, 23 को गया हुआ है, तो इसके वैसा, तो वैसा होगा कि वहाँ पे वैसा अपना डेटा आएगा करके. ये यशिका चावला वाला जो है उनका एक्चुअली क्लोज कर दो. 6,40,000 तो मुझे समझ में आ गया. 1,40,000 का यू हैव मल्टीपल queries which is coming in, but you that 1,40,000 is not increased to 6,40,000 because सिर्फ 3 लाख की तो है. नहीं सर, सपोज करो एक एसआर में किसी में 58 कमेंट्स आ रहे हैं, किसी में 60 कमेंट्स आ रहे हैं, किसी में 70 कमेंट्स आ रहे हैं, 30 कमेंट्स आ रहे हैं, तो उतने बार रिपीटेटिव होते चला जाएगा ना. मुझे समझ में आ गया. तो यू आर सेइंग मल्टीपल कॉलम्स आर कमिंग फॉर द सेम दिस थिंग. नॉट कॉलम्स डीजे, रोज. मल्टीपल रोज. रोज. मुझे दिखाओगे एक बार इफ यू कैन. एक सुमित एक एग्जांपल दिखाओगे प्लीज फॉर मी टू सर अंडरस्टैंड. मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट शायद ओपन है मेरे पास सर शहनाज की. मेरे ये आईटी टीम ने तो एक्चुअली मेरा दिमाग हिला दिया है. उनको क्या समझ में नहीं आ रहा है कुछ. डीएक्स ऑफ द फर्स्ट थिंग. एग्जैक्टली कुछ और ही टेंजेंट में जा रहे हैं वो, तो खत्म करने का छोड़ते मैं क्या बोल रहा हूँ वो लोग क्या मुझे बोल रहा है actually exactly? चाहिए. एक तो एक्चुअली पीनो भी एक्चुअली रॉन्ग स्टार्ट किया उसने. उसको वो बोलना ही नहीं चाहिए था. ये लोग डाउनलोड करते हैं ना सुमित, ये डाउनलोड राइट. वो सुमित को तो सब कुछ पता है. वो जब भी कॉल में आता है वो तो कहता है मेरे को ये पता है वो पता है, वहां से ले आओ यहाँ से ले आओ, ऐसे ही जाएगा वैसे ही जाएगा. सब स्ट्रक्चर पता है, सब कुछ पता है, तो एक्चुअली करा के दे दो ना फिर. चलिए छोड़ो. हमारे पास एक्सेस का इशू रहता है वरना हम खुद हैंडल कर सकते हैं चीजें. यही प्रॉब्लम है. अच्छा ऐसे आ रहा है. ये देखो भी मल्टीपल सब, मतलब आपको सब कमेंट्स मिल जाएंगे. जम्बर्ड है क्योंकि कोई डेट का कॉलम नहीं है. अगर डेट ले आऊंगा तो दे कैन बी इन अ सीक्वेंस. लेकिन इस तरह 68 टाइम्स है. सिर्फ इसमें है या सब में है? सब बहुत सारे हैं. नहीं ठीक है, कोई भी केस एक कमेंट में क्लोज नहीं होगा ना, मल्टीपल कमेंट्स तो रहेंगे ही. हर एक कमेंट के लिए एक एक्स्ट्रा वो क्रिएट कर रहा है. 44 कमेंट्स हैं. इस केस नंबर में 44 कमेंट्स हैं. 43 है, 42 है, 38, 38, 38, 37. भैया तो मैं इनका फर्स्ट ला सकता हूँ या लास्ट ला सकता हूँ. मैं वो भी तो मैं बोलूंगा तो एक्चुअली मेरे ऊपर हो जाएगा ना वो. पिछली बार भी हमने ये डिसीजन लिया था सुमित. अच्छा हुआ किसी ने पूछा नहीं कि ये 4,000 कैरेक्टर किसने डिसाइड किया, क्यों नहीं तुमने पूरा दिया. वो एक्चुअली जब आ जाता ना तो हम लोग सब व्हेन आई से इट इज टुगेदर, तो टुगेदर मतलब किसने लिया, ये भी क्वेश्चन एक्चुअली अरविंद सर पूछने लगे उसमें. तो मुझे एक्चुअली कोई डिसीजन नहीं लेना है. तो इस बार मैंने जो भी आपके पास आया था वो मैंने दिखा दिया उनको कि भाई ऐसा आया हुआ जंगल उसको क्लीन करा रहा है. वो उतना तक मैंने उनको बता के रखा था. अब इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मल्टीपल है तो अब मल्टीपल डेटा साइज बहुत जाएगा सर. प्रॉब्लम डेटा साइज से. अभी वो मेल्स का तो ऑलमोस्ट साइज 7 GB का, 6 GB का. अब उसमें केस नंबर्स कोई ये कमेंट्स भी बड़े बड़े भी होते हैं. वो कितना उसमें मेल भी डुप्लीकेट आएगा ना. हाँ मेल भी डुप्लीकेट हो गया, पूरा डेटा डुप्लीकेट हो गया ना. ये देखो ना, मैं आपको सैंपल दिखाता रहा हूँ. इधर ये देखो मेल बार बार सेम रिपीट हो रहा है. ये पूरा मेल हिंदी में लिखा हुआ है, ये 58 टाइम्स रिपीट हो रहा है. सिर्फ रिमार्क्स ही चेंज हो रहा है. ये रिमार्क्स चेंज हो रहे हैं. मैं नहीं, एक ही रिमार्क बार बार आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Guys, we are live on YouTube.
Please have it concluded earlier. Yashika, we have We are live on some YouTube. long term पूरे emails भी लिखे हुए हैं देखो clear. Hey guys, we are live on YouTube.